Hello children, I'm back again with the third part of types of chemical reaction of your chapter number 1. Okay, now number 5, I have number 5, that is exothermic reaction. Now as the word means exo means exit, something is given out. So in this type of reactions in which heat is given out, or produced. समझ आया? For example, magnesium when react with oxygen, it gives magnesium oxide plus heat. Number 2, carbon when react with oxygen, it form CO2 plus heat. आप लोगों ने घरों में देखा होगा when fuels are burnt, you see that heat is given out, है ना? Any fuel is burned, जब fuel burn होता है तो उसमें से heat निकलती है. So वो किस reaction का example है? वो exothermic reaction का example है. Like this is methane. What is this? This is methane. Methane when burnt, it forms CO2 plus H2O. H2O in the form of vapor. So we put it as gas. Okay, vapor form. Okay, plus heat. So these are all an example of exothermic reaction. I hope this is clear, children. Now number 6 is endothermic. Endothermic reactions. Endo. Now what is this? Endo means giving, supplying energy, supplying heat. Okay. So reactions in which heat is absorbed, that you have to supply heat to the reactant so that absorbed. So you have to supply heat so that the reaction can take place. Now for example, I'll give you example. मैं आपको example से समझाती हूँ. जैसे आप calcium carbonate लिया solid form में. What is this calcium carbonate? Limestone. And when it is heated, it decomposes into calcium oxide, that is known as in the form of solid quicklime, plus carbon dioxide gas is given out. Okay, so this is the symbol of heat, that is we are heating this solid. Okay, number 1. Number 2, ammonium chloride in the solid form, when it is heated, it gets ammonia and HCl in the gaseous form. Okay, so is it clear from this? The two examples, this is an example of endothermic reactions. Now we move to the most important type of reaction, which is known as oxidation and reduction reaction. I want to tell you children कि ये जो oxidation reduction reactions हैं बहुत important reactions हैं. आपको thoroughly NCERT books पढ़नी है, प्लस आपको वीडियोस देखने हैं, मेरे वीडियोस, ताकि आप अच्छे से आसानी से इसे समझ पाएं कि what is oxidation and reduction reactions. Okay, the first I will take in this oxidation reaction. Now oxidation का मतलब कोई भी 3 चीज़ें स्टेप्स अगर होते हैं किसी रिएक्शन में तो उसे आप ऑक्सीडेशन बोल सकते हो. कैसे? नंबर 1 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन ऐड होता है किसी रिएक्शन में, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और वाई आई एम पुटिंग और, क्योंकि इन तीनों में से कुछ भी एक हो सकता है. अगर वो कोई भी तीनों में से एक आपको उस रिएक्शन में दिखता है तो वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहेगा. और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, नाउ विथ एग्जाम्पल्स आई एम एक्सप्लेनिंग यू विथ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ. और ये चिल्ड्रन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट डेली लाइफ में. जैसे आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, रेंसिडिटी, ओके, या आप रेस्पिरेशन, जब आप रेस्पिरेशन आपके सेल्स में होता है तो जो रेस्पिरेशन है वो भी एक टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं.
ठीक है। सो ये डेली लाइफ में ये रिएक्शंस बहुत होते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव 2NaO। ओके, इस एग्जाम्पल में यू कैन सी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नाउ नंबर 2, zinc gives zinc 2 plus 2E minus. Now what is this, children? You can see from this zinc is losing 2 electrons and it becoming a cation. आपको ये 9th क्लास में पता होगा, ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे कि केटाइन क्या होते हैं, एनाइन क्या होते हैं। इसमें जिंक एक इट इज फॉर्मिंग अ केटाइन। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड नंबर 3, रिमूवल ऑफ hydrogen, CH3 CH2OH in the presence of 300 degree centigrade in the presence of copper। ये क्या है? What is this? This is ethanol। जब इथेनॉल को हम कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो ये फॉर्म करता है CH3CHO प्लस H2O। तो यहाँ आप देख, इस रिएक्शन में चिल्ड्रन आप देख सकते हैं बच्चे कि आपका H2 रिमूव हुआ है और इसने बनाया है इथेनॉल। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन? बिकॉज आपका हाइड्रोजन इसमें रिमूव हो रहा है। देखो, थर्ड एग्जाम्पल में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, सेकेंड एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, एंड फर्स्ट एग्जाम्पल में ऑक्सीजन सोडियम से कंबाइन हो रहा है। तो इस तरह के जितने रिएक्शंस हैं जिसमें इस तरह की पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा होता है कि या तो ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन रिमूव हो, या इलेक्ट्रॉन लॉस हो, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं।